Lagrange's mean value theorem we have to discuss. Okay. Hello. Lagrange's mean value theorem. Hello. 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 Lagrange's mean value theorem. We have done yesterday the statement. Statement. What is the statement? I gave Good yesterday only. afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Sir, Let my mic wasn't working, sir. That is why I joined. okay, no problem. Let f of x be a function. Let f of x be a function such that f of x is a function with some special properties. Number one, f of x is continuous. F of x is continuous on closed interval a comma b. Second condition, f of x is differentiable on open interval a comma b. Closed interval continuous and open interval differentiable in open interval. But we don't have here condition number 3. Two conditions are there. Then there exists a point. There exists a point C belongs to A comma B such that f dash of C is equal to f of B minus f of A by B minus A. This is your statement. So we have to discuss about the proof also for this theorem. But before moving to the proof, I will show you what is the geometric meaning of the Lagrange's mean value theorem. Geometrical interpretation, we say, geometric meaning of this theorem. In the exam, sometimes they may ask you, write the geometric meaning of Lagrange's mean value theorem. So the heading will be geometric interpretation. Interpretation of Lagrange's mean value theorem. Yesterday I sent you so many PDFs regarding this theorem. Yes, sir. Still, I want to discuss something like geometric meaning, actually what it represents. See, what is the statement of Rolle's theorem? Actually, I want to connect this one again with the Rolle's theorem. Can you tell me what is the statement of Rolle's theorem now?
statement of Rolle's theorem is important now, because here this theorem is again depending upon Rolle's theorem only. Come on, tell me the statement of Rolle's theorem so that I can connect this theorem with the Rolle's theorem. Sir, let f of x be a function where f of x is continuous for open interval a comma b. F of x is differentiable for closed interval a comma b. F No, of a no, equals to f. reverse. First of all, close, then open. Okay. First is closed interval, Okay, then sir. next is open interval. Continuous in closed interval a comma b. And So f f of of a is x equals to, is continuous on closed interval a comma b. and F of a equals to f of b. just wait for 1 second. Then there should be at least a point. F of a is equal to f of b condition is there, right? Means like Yes, already sir. we have shown the geometric meaning. F of a and f of b are equal, but now we take Yes, the sir. advantage of this point that f of a and f of b are not equal here. F of a and this is f of b. In Rolle's theorem they are equal, but in Lagrange's mean value theorem they are not equal. We take the advantage of that only, and we can easily prove this one. So there is a possibility that f of a is here, f of b is here, or maybe f of a is lengthy and f of b is smaller. Then we use the same concept that f of a is not equal to f of b. What here we have to do it here is, there is possible, see, if I join these two, the possible curves are, because it is continuous now, this is your possible curve. This is on one more possibility. Not exact. We'll make it one more time. So now, what happened to these points? This point is nothing but a comma f of a. This point is nothing but b comma f of b. Similar story here, a f of a, b f of b. So what to do here is we have to join these 2 points. Joining these 2 points. If you join these 2 points, let us say this is a, this is a capital A. This we say that capital B. If I write the coordinates of A is equals to a comma f of a, and b is equal to, the coordinates of b is equal to b comma f of b. Now considering this is x1, y1, considering this is x2, y2. What is the formula? How to find out the slope? Slope m is equal to y2 minus y1, m1 we say it is, y2 minus y1 by x2 minus x2. Y2 value is f of b minus y1 value is f of something we wrote wrong. It is f of a. F of b minus f of a by b minus a. This is the slope of these 2 points AB. And already we know that by Rolle's theorem, there exists a point here between A and B. If you take that point, if you see that point, it will be like that. Like that we see. Now, this is actually f dash of c value. F dash of c, and f dash of c means it's a derivative. So f dash of c, that we take it as m2 value, which is equals to f dash of c. Now, if you see the figure, these 2 lines are parallel, no? Yes, sir. If 2 lines are parallel, lines are parallel.
lines are parallel. It means slopes are equal. M1 is equals to M2. M1 is equal to M. M1 value is f of B minus f of A by B minus A. And what about M2 value? M2 value is f dash of C, which is nothing but our theorem proof. This is called geometric meaning of Lagrange's mean value theorem. So if they ask you write the geometric interpretation of Lagrange's mean value theorem, you have to draw these two figures and write down this much is enough. For 2 marks only you will get it. Okay. Okay, we have a proof also. We have to discuss proof later on. Now we have to move on to the problems. Now the questions will come, you see. The questions will come in exam. Maximum the questions will be inequality questions will come. Inequality questions will come in exam. Inequality questions. Before that, I'll go for first easy question. Number 1. Find C of the Lagrange's theorem of Lagrange's similar questions आने के possibility बहुत कम रहता है. Just we are taking some examples. Similar questions तो आ नहीं सकता. For इसका एक similar question 2023 सितंबर के पेपर में आया. इसका similar question है, वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, पहले इसको करेंगे. f of x is equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, and here the interval is 0,4. You have to find out the value of C using Lagrange's mean value theorem, and here the interval will be given 0,4. So we need to check the value. Number 1, condition number 1, f of x is continuous or not. Before that, let me write f of x here. F of x is equal to, we shall write this x minus 1 as it is, and we multiply these two. Get here x square minus 3x minus 2x plus 6. This is equal to x minus 1 into x square minus 5x plus 6. Now one more time, if you multiply x into x, x cube minus 5x square plus 6x minus x square minus into minus plus 5x minus 6, and if you write in a proper order, we get x cube, which is a polynomial. 5 minus 1 is minus 6x square, and 6 plus 5 is 11x, and minus 6, this is our f of x value. So let me check the condition number 1 करके काम करेंगे. Derivative we find out करेंगे, and we write together. X cube derivative is 3x square. X square derivative is 2x, means 6 2s are 12x plus 11. So here we write, therefore f of x is altogether I want to write two conditions: continuous because it is a polynomial, and differentiable because derivative exists, on closed interval 0,4 and open interval 0,4 respectively. Together I wrote here respectively. दोनों conditions को एक ही बार कर दिया respectively. So after that, what to do? Directly we can use now, because conditions satisfied. Condition number 1 and condition number 2 both satisfied. So what to write here? Therefore, thus f of x satisfies
all conditions of Lagrange's mean value theorem, then there exists a point C belongs to A comma B such that, what's the formula? F dash of C is equal to F of B minus F of A by B minus A. Now F dash of C value from here we can get it. Look at equation number 1 में से F dash of C की value ला सकते हैं आप. Replacing x with C, we get 3C square minus 12C plus 11 is equal to F of B. F of B means here A value is 0, B value is 4. F of B means we'll do in rough column and we substitute here. If you place in place of x, if you put 4 power 3 is how much? Can you tell me this? बाद में erase कर देंगे. 4 power 3 minus 6 into 4 power 2. Do you have a calculator with you right now? Yes, sir. Can you tell me this answer? F of A is यहाँ पर भी रख सकते. एक मिनट और शॉर्ट करके बताता हूँ. ये और शॉर्ट हो जाता. एक मिनट यहाँ रखे तो और इजी होता. देखिए 4 minus 1 is 3, 4 minus 2 is 2 into 4 minus 3 is 1. 3 to the 6. 6 minus F of A 0 minus 1 मतलब minus into minus. So minus 6 minus into minus plus 6 divided by B minus A. B value is 4. 4 minus 0 is 4 only. So this is 3C square minus 12C plus 11 is equals to 12 divided by 4. 12 divided by 4 is 3. If you bring this side, minus 3 is equal to 0. Now 3C square minus 12C plus 8 is equal to 0. Now we are getting a second degree equation, but we are unable to find out the factors. So we use the formula. Formula work here. C is equal to minus B plus minus under root B square minus 4AC by 2A. Here our A value is 3. This is the basic formula where roots we are not getting, then we are using this formula. C is equal to 8. Then C is equal to minus B means 12. 12 plus or minus B square is 144 minus 4AC. If you calculate directly, we get 48 by 3 to the 6. Now this value will be solved in two cases. Actually, no. Two cases to go. Yes. 12 plus root 48 by 6 is one value of C, or another possible value of C will be 12 minus root 48 by 6. Out of these two, definitely we get one value which lie between this interval. Can you tell me that value? If you have a calculator, even I will also check it. 12 plus root 48 divided by 6 is equals to 3.15. One answer will be 3.15. It's one possible value of C. Another one, if you take the negative case, you get 0. Actually, both values are exist.
This is 0.85. Both of the values of C are existing in this interval, right? इसीलिए अपन क्या बोल रहे थे स्टेटमेंट में, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी. क्वेश्चन में क्या बोल रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, एंड वी गॉट द वैल्यूज ऑफ सी. 3.15 is also lies between this interval, and 0.85 is also lies in this interval. Means both of the answers are correct, and this is your final answer. This is the way we are verification. We are verifying and we are finding the value of t using Lagrange's mean value theorem. बट एग्जाम में लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो इनइक्वालिटीज की बेस पे आते हैं. इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन अपने पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5. साइन कॉस टाइन ई पावर एक्स लॉग, टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम में आने के. तो उसमें से एक वाला मैं इनइक्वालिटी का अभी कर देता हूँ आपको. वो ई पावर एक्स का है, वो इंपॉर्टेंट भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन वही है. क्वेश्चन है शो दैट, ये क्वेश्चन एग्जाम में देके बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करा और बहुत बार आते रहता क्वेश्चन. शो दैट फॉर एनी x greater than 0, 1 plus x is less than e power x is less than 1 plus x e power x. अब आप नोटिस करो, देखो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्या, यूजिंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, यूजिंग Cauchy's मीन वैल्यू थ्योरम, एंड यूजिंग कौन सा भी रोल्स थ्योरम और इंटरवल, क्या भी नहीं है क्वेश्चन में. खाली शो दैट बोल के दे दिया, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन. सो मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, बट दिस क्वेश्चन गिवन 2 टाइम्स. तो अपन इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे. अब की बार आ गया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो. So now look at, we don't have f of x here. So we don't have f of x, so let us take. We have to take our f of x value. Can you tell me which one we have to take f of x? क्वेश्चन में क्या रिपीट हो रहा, e power x रिपीट हो रहा. E power x, yes, e sir. power x is our f of x, and the interval is not given. Now specific for this problem, we have to take the interval will be 0 comma x only. Then only this inequality will prove. Inequality के problem तो सिर्फ Lagrange से solve कर सकते हैं. स्पेशली यू हैव टू मेमोराइज दिस वन. एफ ऑफ एक्स तो देख के बोल सकते हैं आप, हर क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स देख के बोल सकते हैं आप. इंटरवल स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम में 0 कामा एक्स लेना है, बाकी के प्रॉब्लम में आपको ए कामा बी लेना है जनरली, अगर नहीं दिया तो. अंडरस्टैंड. नाउ कंडीशन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स वैल्यू तो है, कंटिन्यूअस भी हो जाता, ये डिफरेंशिएबल भी हो जाता. यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इफ यू फाइंड आउट, यू गेट ई पावर एक्स अगेन ना. डेरिवेटिव ई पावर एक्स से क्या करना थी, Lagrange's mean Yes, value theorem number 1 and number 2 conditions both are satisfied. तो डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे बाय, continuous ये काम करेंगे ना, आप फाइंड आउट कर लेंगे, अदरवाइज आपको बाद में फिर ये लिए नहीं थे ना आप बोल के ऐसा ई पावर एक्स में. तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस and differentiable on closed interval a comma b and open interval a comma b respectively. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना जिसको स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते, एग्जामिनर ये पॉइंट को देखता है, ये आपकी नॉलेज है असल में. तो बाय Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि अपन वेरीफाई तो नहीं कर रहे, शो कर रहे हैं ना, इसीलिए बाय Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम वी राइट डायरेक्टली फॉर्मूला f dash of c is equal to, can you tell me the formula, f of b minus f of a by b minus a, correct? Yes, sir. Now f dash of c is nothing but e power c here, correct? Yes, sir. F of b means e power b,
f of a means e power a divided by b minus a. But already we know that our a value is 0, our b value is x. Replace here. E power c is equal to e power b. B value is x minus Sir, a. it B has to be value. e power x, no, sir. Huh? F dash of x. Are we taking it in terms of c? Yes, I'm taking in terms of c. Okay, sir. F dash of c Yes, is sir. e Got power it. c. E power 0 by b minus a. Yes, sir. B minus a means x minus 0 is x only. E power c is equal to, this is e power x minus e power 0 value, we know that it is 1 divided by x. Let me call this one as equation number 1. By Lagrange's mean value theorem, there exists a point C belongs to A comma B such that E condition satisfied. Now we use this statement. Since C belongs to A comma B means 0 comma x. What do you mean by this? C belongs to 0 comma x means the value of C should lie between Life. 0 to x. Correct? Yes. Yes, sir. So what to do here is, सबको मैं क्या कर रहा हूँ, e पावर, सबको बेस e पावर लगा, e पावर, इसका भी बेस e पावर, e पावर 0 is 1, is less than e पावर c की वैल्यू या इक्वेशन नंबर 1 में है, देखो e पावर x minus 1 Minus 1. divided by x is less than e power x. So what to do? Multiplying x on both sides. मल्टीप्लाइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें अपन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया, अक्सर आते रहता, इंटरवल नहीं है ना तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते, बोल के देते रहता. मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड्स, एक्स इज लेस देन, यहाँ से आपको पूरे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते रहते. ई पावर एक्स माइनस 1 लेस देन एक्स ई पावर एक्स, वी आर मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड्स. एक्चुअली बोथ साइड में होता थ्रू आउट. नाउ आई वांट टू कैंसिल दिस माइनस 1. ये माइनस 1 को कैंसिल करने के लिए इनइक्वालिटी में पूरों को 1 ऐड करना. x plus 1 is less than e power x minus 1 plus 1 is less than 1 plus x e power x. तो को मैं 1 1 1 ऐड कर दिया. plus 1 minus 1 cancel. x plus 1 is nothing but 1 plus x. This is less than e power x. This is less than 1 plus x e power x, which is our required result. This only we have to prove. Yes, sir. Very important question. Lagrange's mean value theorem से problem solve होते. The inequality problems will be solved by using Lagrange's mean value theorem only. No other option. Inequality के problem को सिर्फ Lagrange's mean value theorem से ही solve कर सकते हैं. Correct है? Yes, sir. एक बार देख लीजिए अच्छे से यार. Lagrange's mean value theorem का proof भी अपने को देखना है. ओके, प्रॉब्लम्स अभी अपन कर रहे हैं, प्रूफ भी देखना है. तो एक बार फिर से बोल दे तो मैं आपको साइन कॉस टैन ई पावर एक्स अपन कर दिए. लॉग एक्स का भी एक क्वेश्चन है, वो कहाँ पर है मैं देख रहा हूँ. लॉग एक्स भी अभी हो गया, तो साइन कॉस टैन पूरी एक क्लास में हो जाता, तो आपका हो जाता, कंप्लीट हो जाता है. अच्छा, इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एग्जाम में 2023 के पेपर में एक रिलेटेड क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है. मैं आपको यहाँ पर अलग कलर से लिख देता हूँ, इसका रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप करो. कल का पीडीएफ का भी कुछ भी करके नहीं बताया. But Okay, sir. I'll send the answer, sir. the f of x value is x into x minus 1 into x minus 2. This much only the question. And here the interval is on 0 comma 1 by 2 will be the interval. ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, बट एग्जाम में सितंबर अक्टूबर 2023 के बैकलॉग के पेपर में ये क्वेश्चन आया, इससे रिलेटेड है. देखो, ये आज जो अपन करें ना,
वैल्यू ऑफ सी, ये क्वेश्चन भी ऐसे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी यूजिंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज दिस वन एंड इंटरवल इज दिस वन। ये आपको एज ए होमवर्क करना है। मैं जरा लॉग का क्वेश्चन देख रहा हूँ, अगर हो गया तो कल की क्लास में 3 क्वेश्चन एक साथ ही कर दिए तो हो जाता ओके है। प्रूफ डिस्कस कर सकते हैं। यस, वेरीफाई Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, प्रूफ का नहीं होता है। और इट्स ठीक है, एक काम करेंगे, इसको कर लेंगे, एक छोटा वाला एक क्वेश्चन है, छोटा वाला है, कर लेंगे, हो जाएगा। वेरीफाई Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f of x is equals to log x। ये वाला नहीं होता, जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं होता है। वो देखता हूँ मैं, वो कोई अलग क्वेश्चन है, प्रूफ का है। इन इंटरवल इज यहाँ पर स्पेसिफिकली 1, दिया, देखो इंटरवल, तो इसका प्रूफ कर देंगे। प्रूफ वेरिफिकेशन है, तो बहुत आसान है इसका प्रूफ, छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी हैव लॉग एक्स। नाउ लेट मी फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। वी गेट log x derivative is 1/x, so differentiable and continuous, therefore f of x is डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। और रिवर्स में भी लिख सकते हैं, नहीं ऑर्डर में लिखे तो और अच्छा रहेगा। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल a comma b and open interval a comma b respectively, so now by Lagrange's mean value theorem there exists a point c belongs to a comma b such that f dash of c is equal to, प्रॉब्लम बार बार करने का रीजन है आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद हो जाए, f of b minus f of a by b minus a। F dash of c we can get from here, that is 1/c। f of b, f of b means we get यहाँ पर रखे तो log b minus log a by b minus a, but our a value is this one, our b value is this one, replace log of b value is e minus log a value is 1 by b minus a, e minus 1, so 1 by c is equal to, you see, log e value is 1 minus log 1 value is 0 by e minus 1, so 1 by c is equals to 1 by e minus 1. How to calculate this? 1 by e value is, calculator में check कर लो, 2.71 आता, minus 1. So what answer we are getting? ये पूरे प्रॉब्लम आप अच्छे से वेरीफाई कर ले सकते हैं। 2.71 इज द वैल्यू ऑफ ई, कैलकुलेटर में भी आता, अदरवाइज डायरेक्ट ई भी रखे तो भी आ जाएगा। 0.58, 0.58 डेफिनेटली बिलोंग्स टू 1 कॉमा ई। ई की वैल्यू 2 पॉइंट, देखो इंटरवल ऐसा होगा, यहाँ पर 1 है, 2.78 मतलब 2.7 इधर आ जाता। ठीक है, ये 0 पॉइंट मतलब आउटसाइड से जा रहा, 0.78 मतलब 2.7 इधर आ जाता। ठीक है, ये 0 पॉइंट मतलब आउटसाइड से जा रहा। 0.78 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 मतलब आउ
right? Question number 6. Not applicable हो रहा. Not does not belongs to 1 comma e. सर उसके बीच में ही आ रहा है 0.51 के बीच में कहाँ से आता है आउटसाइड हो जाता सर बट इट डज बिलोंग ओके हाँ यस सर या कुछ भी नहीं होता नो प्रॉब्लम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल हर बार एप्लीकेबल होना क्या जरूरी तो नहीं है एप्लीकेबल रोल्स थ्योरम में भी ऐसे कुछ केसेस आए थे ना नॉट एप्लीकेबल वाले यस सर तो ये 0.8 बोले तो इधर चले आता है यहाँ पर हो जाता 1 और 2.7 के बीच में नहीं आता वो it means that Lagrange's mean value theorem is not verified. That's it. Not applicable, not verified. Both are same meaning. So this is about Lagrange's mean. कल की क्लास में अपने को प्रूफ्स डिस्कस करना है Lagrange's mean value theorem का प्रूफ Cauchy's mean value theorem का प्रूफ या नहीं तो tan इनवर्स sin इनवर्स cos इनवर्स के प्रॉब्लम्स दोनों में से कोई सा भी एक देख के मैं करा देता हूँ ठीक है ना तो कल का होमवर्क आप करको करिए आप करके मेरे को सेंड करिए ये आज की क्लास तो हो गई आपकी यस सर टुमारो कैन वी हैव क्लास इन द इवनिंग सर यस टुमारो क्या बोली कैन वी हैव क्लास इन द इवनिंग टुमारो ओके ओके सर ओके इवनिंग में ले सकते क्या सर क्लास हाँ ठीक है ठीक यस है ठीक है ठीक है राइट ओके सर थैंक यू